Good morning, dear kids. Today we are doing with our inverse variation. Till yesterday we did direct variation. In my previous video we did with direct variation. Direct variation means if there are two quantities, if one is increasing, second is also increasing, like we did the cost of notebooks. अगर आप जितनी ज़्यादा नोटबुक्स परचेज कर रहे हैं उतना ज़्यादा कॉस्टिंग होगा, उतना ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा, तो दैट इज़ योर डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट वेरिएशन. बट इन केस सर्टन थिंग्स आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको घर को पेंट करवाना है, तो अगर आप 4 वर्कर्स रख रहे हो, 4 पेंटर्स रख रहे हो पेंट करने के लिए, तो वो आपको 2 दिन में फिनिश करके देंगे. लेकिन अगर सिर्फ 2 ही पेंटर्स रख रहे हो तो क्या काम जल्दी फिनिश होगा या लेट फिनिश होगा? सो इफ़ यू आर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पेंटर्स, द नंबर ऑफ डेज विल इंक्रीज. But if you are increasing the number of painters, the number of days required to finish your work will decrease. So there is an inverse relation. Clear? So here, yesterday we did direct relation where I said I'll be giving you a formula x1 upon y1 is equal to x2 upon y2. Now here in inverse relation, x1 into y1 is equal to x2 into y2. That's the formula. That means if I take this as x1, y1, so 4 into 6. That is your 6 4s are 24. Yes. So 3 into 8, you should also get 24. 12 into 2 is also 24. 1 into 24 is also 24. So if all are same, so you will say x varies inversely with y. Clear? How you have to present? You will write x1 into y1, that is 4 into 6 is 24, block it. Then x2, y2, 3 into 8 is 24, block it. x3, y3, 12 into 2 is 24, make a block. x4, y4, 1 into 24, make a block. So you all got these all 24. So you will write x1, therefore x1, y1 is equal to x2, y2 is equal to x3, y3 is equal to x4, y4. Therefore, x varies inversely with y. So this way you have to present each. Similarly, you have to do your problem number 2 and problem number 3. This is x1, y1, this is x2, y2, x3, y3, x4, y4. आपस में मल्टीप्लाई करने हैं और देखना है कि क्या आंसर सेम आ रहे हैं. इफ़ द आंसर ऑफ x1, y1 इज़ नॉट इक्वल टू x2, y2 और x3, y3 और x4, y4, you have to say that they are not inversely proportionate. Clear? Next, as I said you, it is given that x and y are inversely proportionate, that is x1 y1 is equal to x2 y2. जो दिया हुआ है x1 y1 उसको यहाँ पे लेना है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक 8 है एक l है, सो 8 इंटू एल. x2 आपका 8 है, y2 आपका l है. From here l you have to keep it here, 4 and 4 here, this 8 will go down, so that will become 16 upon 8 is l, 1s are 2s are. So what is value of l? 2. So you got l as 2. Clear? Clear, my dear kids? Next you have, similarly you have to find m. Is the picture clear? I'll zoom it little. Here you can find this is m. अब क्या करेंगे? अब जो दिया हुआ है उसको x1 y1 और ये आपका है x3 y3, बिकॉज दिस इज़ x2 y2, दिस इज़ x4 y4. तो अभी आपको इन दोनों को इक्वेट करना है. तो x1 y1 तो 4 और 4 ही है, x3 y3, x3 is 2, y3 is m. From here you have to cross multiply, sorry, you have to take this 16 के नीचे 2 and you will get m की value as 8. Clear? Similarly you have to do with your third. हर बार x1 y1 के साथ ही आपको इक्वेट करना है. So x1 y1 is equal to x4 y4. So x1 y1 is 4 into 4, x4 y4 is 32 into n. This is your x4 y4 which is in the fourth column. Clear? From here you have to find n की वैल्यू. So n की वैल्यू 16 upon 32, that is 0.5.
Clear? Similarly, you have to find L, M, N of your problem 2 का 2. I'll jump on to problem number 3 and it says 36 men can do a piece of work in 7 days. So number of men and days. These are the two quantities. Number of men and days. So number of men, 36 men, 7 days. How many men will be required to do a same work in 42 days? So this is your thing. Clear? So how you will do it? Let's start. Here this is your x1, y1, this is your x2, y2. This is inversely proportionate क्योंकि men और days हैं. जितने ज़्यादा men होंगे उतने कम days लगेंगे काम करने में. जितने कम men होंगे उतने ज़्यादा days लगेंगे. Therefore it is inversely proportionate, and for inversely proportionate I have given you a formula. x1 y1 is equal to x2 y2. What is x1? 36. What is y1? 7. What is x2? X. What is y2? 42. You have to keep x here, 36 into 7. This 42 you have to take in here. And from here you will get the value of x. Clear? I'll jump on to problem number 4, which says 12 pipes. So number of pipes. Fill a tank in 42 minutes and time. So 12 pipes can make it in 42 minutes. How long will it take to fill the same tank if 21 pipes are used? So 12 pipes पहले थे तो 42 minutes लगा था. अब 21 pipes हैं तो कितने minutes? This is your x1, this is your y1, this is your x2, this is your y2. x1, y1 is equal to x2, y2. Put in the values and find x. My dear kids, only you have to remember, you have to keep your quantities like this. ऊपर नीचे क्वांटिटीज़ रखो. पहले वाले केस में जब हम लोग ट्रेडिशनली करते थे तो हम दो क्वांटिटीज़ ऐसे लिखते थे आजू बाजू में. अभी आपको क्वांटिटीज़ ऊपर नीचे लिखनी है. देन द फॉर्मूला विल वर्क. प्रॉब्लम नंबर 4. In a fort 150 men had provision for 45 days. कितने लोग थे? नंबर ऑफ मैन 150. उनका खाने पीने का प्रोविज़न कितने दिन का था? डेज कितने थे? 45. After 10 days, now this problem is little tough, you have to understand. Total men कितने थे? 150. After 10 days, so after 10 days मतलब यहाँ से तुमको 10 माइनस करना पड़ेगा डेज से. So now it will be how many days? 35 days. 25 men left the fort. 25 men left मतलब minus 25 men में से, तो that will be 125 men. Clear? I'll explain you again. Wait. The easiest method I'll explain you. The only thing you have to consider after 45 10 days मतलब 45 में से तुमको days कम करने हैं. men आपका 150 है, ठीक है, और आपका ये कितने डेज़ में जा रहा है? 45 डेज़ में. आफ्टर 10 डेज 25 men लेफ्ट द फोर्ट. तो अभी कितने men हो गए? 125. अब हमको फाइंड करना है x नंबर ऑफ डेज. लेकिन यहाँ पे सिर्फ ध्यान इतना देना है कि 10 दिन बीत चुके, तो यहाँ पे -10 करके 35 कंसीडर करना है. 10 दिन चले गए ना, तो 150 men, 35 days and 125 men, how many days? So this is your x1, this is your y1, this is your x2, this is your y2. Yes, I know this many kids don't accept the fact कि आपने 45 में से 10 क्यों माइनस किया, क्योंकि 10 दिन बीत चुके. सो जो बीत चुके उसका कैलकुलेशन मैं क्यों करूँगी? आने वाले दिनों का कैलकुलेशन करूँगी ना. तो 45 माइनस 10 मतलब 35 नंबर ऑफ डेज लेने हैं 150 men के लिए. सो दीज आर योर क्वान्टिटीज़. Getting my point? So x1 y1 is equal to x2 y2, that is 150 into 35 is equal to 125 into, यहाँ पे आपने x डाल दिया. So x is equal to 150 into 35 upon 125, and that's your answer. Clear?
सो सिर्फ ध्यान इतना देना है कि नंबर ऑफ डेज में से आपको डेज कम करने, 45 नहीं लेना है, 35 लेना है, क्योंकि आपको बोला गया है आफ्टर 10 डेज, तो 10 रिड्यूस करना है. नेक्स्ट इज योर 72 men. सो men आर 72 कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 25 days. सो डेज कितने हैं? 25. हाउ मैनी डेज विल बी रिक्वायर्ड? Will 30 men do the same work? 30 men कितने number of days? So this is your x1, y1, x2, y2. So x1, y1 will be equal to x2, y2. x1 is 72, y1 is 25, x2 is 30, y2 is x. So you have to keep x here, 72 into 25 upon 30. You have to solve this and get the answer. Clear? Next is if 56 worker can build a wall in 180 hours. So how many number of workers? Number of workers 56. Hours 180. How many workers will be required to complete in 70 hours? How many workers? तो workers की जगह पे x, hours की जगह पे 70 hours. So this is your x1, this is your y1, this is your x2, this is your y2. Yes, clear? And the formula is same, x1 y1 is equal to x2 y2. You have to put 56 into 180 is equal to x into 70. You have to keep x here, 56 into 180 here upon 70. You have to solve this and get the answer. Clear? Don't forget to write the units. अगर कुछ हार्स में है, कुछ मिनट्स में है, कुछ सेंटीमीटर्स में है, तो यूनिट्स लिखना ज़रूरी है. यहाँ पे तो शायद नंबर ऑफ वर्कर्स फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ वर्कर्स तो सिर्फ नंबर ही रहता है, नो यूनिट इज़ रिक्वायर्ड. प्रॉब्लम नंबर 8 सेज अ कार टेक्स 6 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर. ओके, सो डिस्टेंस आपका है 50 किलोमीटर और अ कार टेक 6 hours. तो इस डिस्टेंस के लिए 6 hours लगते हैं. ओके, हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रैवल्स एट अ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर. ये अगर 75 पे जा रहा है, 75 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, तो इसको कितने घंटे लगेंगे? तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस नहीं भी लिखा तो आप स्पीड लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम. ये पर आवर डाल दो, पर आवर डाल दो, ठीक है. सो स्पीड अगर 50 किलोमीटर पर आवर है तो 6 hours में पहुंच जाएंगे. अगर 75 किलोमीटर है तो कितने घंटे लगेंगे? सो इट्स एन इनवर्स रिलेशन, x1 y1 x2 y2. This is your x1, this is your y1, this is your x2, this is your y2. You have to simply put in the values. My dear kids, it's only the matter of interest, nothing else. The problems are very basic, and the way I am teaching, I know these are very, very simplified methods which I am giving you. You have to just put in and get the values. सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. So answer will be this. Yes, my dear kids. So this is your inverse. Okay, 5 to 6 problems I'll be giving extra. So you have to solve video problems as well as extra problems. God bless.